हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था टॉर्जन ऑफ सर्कुलर सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट्स के लिए। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जब सॉलिड शाफ्ट्स आपके सीरीज में अटैच हों और पैरेलल में अटैच हों तो किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ओके। शाफ्ट इन सीरीज, जब भी शाफ्ट्स आपके सीरीज में अटैच होंगे तो सीरीज में अटैच होने पर जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा उनका वो डिफरेंट डिफरेंट होगा सीरीज में जब आप उसको ज्वाइंट करेंगे। तो जो टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो दैट विल बी इक्वल टू दी थीटा 1 प्लस थीटा 2, और जो टॉर्क होगा वो कॉमनली आपके डिस्ट्रीब्यूट होगा सीरीज में। जैसे मान लीजिए एक शाफ्ट है हमारे पास, उसके साथ दूसरी शाफ्ट अटैच कर दी गई, तो जो टॉर्क अप्लाई है टी वो कॉमन है, बट जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा थीटा 1 और थीटा 2 वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जब भी पैरेलल में आपकी शाफ्ट्स को अटैच किया जाएगा तो एंगल ऑफ ट्विस्ट इनका सेम होगा, बट जो टॉर्क होगा, टोटल टॉर्क, वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। टोटल टॉर्क विल बी इक्वल टू दी सम ऑफ द टॉर्क ऑफ शाफ्ट 1 एंड टॉर्क 2, शाफ्ट इन टॉर्क 2। तो टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट, फर्स्ट शाफ्ट का टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट प्लस सेकेंड शाफ्ट का एंगल ऑफ ट्विस्ट, इसी तरह जो टोटल टॉर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू दी फर्स्ट शाफ्ट का एंगल ऑफ फर्स्ट शाफ्ट का टॉर्क, जो भी टॉर्क वो अप्लाई ट्रांसमिट कर सकती है, प्लस सेकंड शाफ्ट में टॉर्क जो भी वो ट्रांसमिट कर सकता है, दैट उनका अलजेब्रिक सम जो होगा वो इक्वल होगा टोटल टॉर्क जो आपकी शाफ्ट ट्रांसमिट कर सकती है। ओके। नाउ एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। स्टेप्ड बार भी है, सीरीज में भी है। क्वेश्चन है द स्टेप्ड स्टील शाफ्ट, ओके, एज शोन इन फिगर। एक स्टील शाफ्ट है, is subjected to a torque T at the free end and a torque 2T in the opposite direction at the junction of two sizes। यहाँ फर्स्ट पे एक टॉर्क है 2T यहाँ पर, और यहाँ एक टॉर्क है T। ओके, व्हाट इज द टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट at the free end if the maximum shear stress in the shaft is limited to 70 meganewton per meter square? Assume the modulus of rigidity to be 84 giganewton per meter square। तो यहाँ पर जो लेंथ दी हुई है फर्स्ट शाफ्ट की और सेकंड शाफ्ट की, फर्स्ट शाफ्ट की लेंथ है 1.2 मीटर, सेकंड की है 1.8 मीटर। फर्स्ट शाफ्ट का जो डायमीटर है वो है 100 mm और सेकंड शाफ्ट का जो डायमीटर है 50 mm। ओके,
This is the point A, B and the point C. अगर हम बात करें यहाँ पर मैक्सिमम अलाउेबल shear स्ट्रेस जो गिवन है वो है 70 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है 84 गीगा न्यूटन per meter square. So for the length BC, for length BC, यहाँ पर जो टॉर्क है शाफ्ट में वो T है और जो लेंथ है शाफ्ट की वो गिवन है 1.8 मीटर्स. डाया दिया हुआ है फिफ्टी mm. पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं हम यहाँ पर. ये होगा पाई d to the power 4 upon 32. 50 mm को हम मीटर्स में रखेंगे. So the polar moment of inertia will be equal to the 6.136 into 10 to the power minus 7 meter to the power 4. Let theta 1 is equal to the angle of twist of C relative to B. Okay. From torsion equation we know that theta will be is equal to the T into L upon G into J. Okay. So from here theta 1 is equal to the torque T into 1.8 upon 84 into 10 to the power 9 into 6.136 into 10 to the power minus 7. Okay. This is the equation number 1. Now, for length AB, torque will be is equal to T because final torque on the shaft is only T. Length of the section is 1.2 meters. Let theta 2 will be the angle of twist for this section. Angle of twist of B relative to A. Theta 2 will be equal to torque multiplied by length upon modulus of rigidity into polar moment of inertia.
T into L is 1.2. G is G is 84 into 10 to the power 9, and polar moment of inertia for this section is 9.817 into 10 to the power minus 6. Okay, theta 1 and theta 2 are in opposite direction. Here the torque applied on the shaft is in opposite direction. Theta 1 and theta 2 are in opposite direction, hence total angle of twist at the C will be theta 1 minus theta 2. Okay, here the maximum shear stress occurs in BC, and its value is 75 meganewton per meter square as per given in the numerical question. We know that from the Torsion equation, T by J is equal to tau by R. Here maximum torque will be is equal to the shear stress into modulus of rigidity, sorry, polar moment of inertia divided by R. Here maximum shear stress will be 17 to 10 to the power 6 Newton per meter square. Polar moment of inertia of section BC is 6.136 into 10 to the power minus 7 divided by radius of this section is 0.025 in meters. So here the torque will be 1718.1 Newton meter. This will be the maximum torque can be transmitted by the shaft, okay, safely. So the angle of twist for the section BC will be equal to the theta 1 is equal to the 1718.1 into 1.8 divided by 84 into 10 to the power 9 into 6.136 into 10 to the power minus 7. It will be equal to 0.06 radian. Okay. Now, angle of twist in shaft AB will be equal to 1718.1 into 1.2 divided by 84 into 10 to the power 9 into 9.8 1 into 10 to the power minus 6 equals to 0.0025 radians. So the total
angle of twist at the point C will be theta 1 minus theta 2. So theta C will be equal to the 3.29 degree. Okay. Okay. Next question. A hollow shaft is 1 meter long. A hollow shaft is 1 meter long and has external diameter 50 mm and has external diameter 50 mm. It has 20 mm internal diameter. For a part of length and 30 mm internal diameter for the rest of length. If maximum shear stress is not exceed is not to exceed 80 meganewton per 80 meganewton per meter square, determine the maximum power
transmitted by it at a speed of 300 rpm. If the twist produced in two portions of shaft are equal, find the length of two portions. Okay, a hollow shaft is 1 meter long and has external diameter 50 mm. It has 20 mm internal diameter. A hollow shaft of 1 meter long and has external diameter 50 mm. It has 20 mm internal diameter for a part of length and 30 mm internal diameter for the rest of length. If the maximum shear stress, if the maximum shear stress is not exceed 80 meganewton per meter square, determine the maximum power transmitted by it at a speed of 300 rotation per minute. If twist produced in two portions of shaft are equal, find the length of two portions. देखिए क्वेश्चन में क्या है, एक 1 मीटर का शाफ्ट है हमारे पास, इस 1 मीटर के शाफ्ट में कुछ लेंथ तक शाफ्ट में जो हॉलो शाफ्ट है वो 30 mm डायमीटर इंटरनल डायमीटर है उसकी, और रिमेनिंग लेंथ में ये इंटरनल डायमीटर है 20 mm. टोटल डायमीटर कितना है 50 mm और जो इंटरनल डायमीटर है फॉर द लेंथ L1 एज्यूम कर लेते हैं वो 30 mm है, और रिमेनिंग पोर्शन का जो डायमीटर है वो 20 mm है. सपोज द लेंथ है L2. टोटल लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज 1 मीटर. ओके, here maximum allowable stress
tau is equal to the 80 meganewton per meter square, and the speed is 300 rotation per minute. Okay. Now maximum torque for the part 1 for length L1 is equal to T1. Okay. Then from the torsion equation, T1 will be equal to the tau divided by R into J1. Okay. Or in the terms of diameter, it will be equal to the tau into pi by 16 d outer to the power 4 minus d inner to the power 4 divided by d outer. Okay. For the length L1, maximum allowable stress is 80 into 10 to the power 6 pi upon 16. Diameter of the length L1, outer diameter is 0.05 meters. 50 mm, the diameter is given 50 mm, so in meters it will be 0.05 meters, and internal diameter will be 0.03 meters. Divided by 0.05. Now the torque T1 will be equal to the 1709 Newton meter. Maximum torque transmitted by the length L1 will be 1709 Newton meter, and thus torque maximum torque for length L2 will be equal to T2. In that case, T2 will be equal to the tau into pi by 16 0.05 to the power 4 minus 0.02 to the power 4 divided by 0.05 tau is 80 meganewton per meter square into pi upon 16 0.05 to the power 4 minus 0.02 to the power 4 divided by 0.05. So the maximum torque can be transmitted by the remaining length will be 1913 Newton meter. Now
For the length L1, the maximum torque transmitted by the shaft whose internal diameter is 30 mm is 1709 Newton meter. If the if we transmit if we want to transmit torque more than 1709 Newton meter from this uh, shaft whose internal diameter is 30 mm. In that case, the maximum shear stress induced in the shaft in this in this portion of the shaft will be uh, increases will be more than its allowable shear stress, which is 18 meganewton per meter square. So the safe torque which the shaft can transmit will be 1709 Newton meter, because uh, the portion the torque transmitted by the portion whose internal diameter is 20 mm is 1913 Newton meter. Uh, so the safe torque which this combined shaft, this step shaft can transmit will be 1709 Newton meter. The safe torque which shaft can transmit is 1709 Newton meter. अगेन अगर शाफ्ट के उस पोर्शन में जहां पर जो डायमीटर है शाफ्ट का वो इंटरनल डायमीटर 30 mm का है, अगर वहां पर टॉर्क की वैल्यू 1709 न्यूटन मीटर से ज्यादा होगी, तो जो मैक्सिमम अलाउेबल शियर स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड है जो दिया गया है वो उस पोर्शन में उस 80 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगा, जिससे शाफ्ट में फेलियर होगा। अगर हम पोर्शन पोर्शन टू की बात करें जहां पर इंटरनल डायमीटर 20 mm है, यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क जो ट्रांसमिट कर सकती है शाफ्ट वो है 1930 न्यूटन मीटर। तो यहाँ अगर हम 1913 न्यूटन मीटर टॉर्क को मैक्सिमम टॉर्क एज्यूम कर लें, कंसीडर करें, तो इस केस में पोर्शन वन जहां पर 30 mm का इंटरनल डायामीटर है वहां फेलियर हो जाएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम अलाउेबल स्ट्रेस की जो शेयर स्ट्रेस की जो वैल्यू दी गई है वहां एक्सीड कर जाएगी, उस जो वैल्यू है मैक्सिमम अलाउेबल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू से ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा, क्योंकि टॉर्क हमने 1709 न्यूटन मीटर से ज्यादा का अप्लाई कर दिया। तो जो सेफ, अगर पूरी कंबाइंड शाफ्ट की अगर हम बात करें, तो जो सेफ टॉर्क, द सेफ टॉर्क व्हिच कैन दिस शाफ्ट कैन ट्रांसमिट will be 1709 Newton meter. Okay. Now the power transmitted by the shaft P is equal to 2 pi nt by 60. Here N is 300 rpm. Maximum allowable torque is 1709 Newton meter. So from here the torque is 53.7 into 10 to the power 3 watt, or 53.7 kilowatts.
Okay. Now length of two portions L1 and L2. Maximum allowable torque is T is equal to the 1709 Newton meter. From torsion equation, we know that T by J is equal to the tau by R is equal to the G into theta by L. Now, from this equation, angle of twist is equal to the T into L upon J into G. Okay. As per condition given, theta is same for the parts. यहाँ पे दिया हुआ था if the twist produced in two portions of the shafts are equal. अगर ट्विस्ट जो है देखिए ऊपर गिवन था ये न्यूमेरिकल में yes if twist produced in two portions of shaft are equal find the length of the portions. Clear? So here theta 1 will be equal to the T1 into L1 upon J1 into G. Material same है and G2 theta 2 will be equal to the theta 2 will be equal to the T2 into L2 upon J2 into G. So as per numerical, theta 1 is equal to theta 2. Here modulus of rigidity is same and the torque, maximum torque which can be transmitted by the shaft is also same. Shaft are in series, in that case T1 is equal to T2. So L1 upon J1 is equal to the L2 upon J2. Okay. Now polar moment of inertia of first section is pi upon 32 0.05 to the power 4 minus 0.03 to the power 4. From here J1 is equal to the 6.09 into 10 to the power minus 6 meters to the power 4. And J2 is equal to the pi by 32 0.05 to the power 4 minus 0.02 to the power 4. So from here J2 will be equal to the 5.44 into 10 to the power minus 6. Okay. So from the equation number 1, L1 upon J1 is equal to L2 upon J2. Wait a minute. This will be
J1 is 5.44. This is 6.09. Okay. Now from here, L1 into J2 is equal to the L2 into J1. From here, 6.09 into 10 to the power minus 6 L1 is equal to the 5.44 into 10 to the power minus 6 L2, or say as we know that L1 plus L2 is equal to the 1 meters. So from here L1 is equal to L2 is equal to the 1 minus L1. Okay. Putting this value in equation number 2, 6.09 into L1 is equal to the 5.44 1 minus L1. Okay. So from here L1 is equal to the 5.44 upon 11.53 is equal to 0.472 meters. So the remaining length will be 1 minus 0.472 meters. So it will be equal to the 0.528 meters. Okay. Okay. So I hope you understand the concept of torsion, or how the power can be transmitted by the solid circular shaft or hollow circular shafts. Okay. Now come to the next topic, column and struts. What is column and what is strut? Straight vertical member. Straight vertical member having compressive force is known as column. Okay. Straight vertical member having compressive load is known as columns, and strut is defined as the any member rather than inclined, rather than vertical, other than vertical, having compressive forces is known as strut.
So a column is a long vertical cylinder bar or vertical member subjected to an axial compressive load and fixed rigidly at both ends. And a strut is a cylinder bar or member in any position other than vertical subjected to a compressive load and fixed rigidly or hinged or pin jointed or at one or both the ends are defined as struts. Connecting rod in an internal combustion engine is strut, and the columns, pillars used in a structure is known as columns. Okay, columns are three types: short columns, medium size columns and long columns. कॉलम्स में जो फेलियर होते हैं जनरली वो तीन तरह से फेलियर होते हैं कंप्रेसिव लोड की वजह से। फर्स्ट फेलियर अकर हो सकता है केवल और केवल कंप्रेशन से। कंप्रेशन के थ्रू क्रशिंग कॉलम के मटेरियल में क्रशिंग हो सकती है। सेकंड फेलियर हो सकता है बकलिंग। सिलेंडर जो कॉलम है हमारा वो बैंड होके टूट सकता है, बैंड होके ये टूट सकता है, तो इसे कहते हैं हम बकलिंग। थर्ड आपका जो फेलियर हो सकता है वो कंबाइंड है, कॉम्बिनेशन के थ्रू। ओके, कॉम्बिनेशन, दोनों के ही कॉम्बिनेशन से कंप्रेशन और बकलिंग दोनों से। लॉन्ग कॉलम्स में जो फेलियर आपके हम देखे गए हैं ज्यादातर वो अकर होते हैं ड्यू टू दी बकलिंग, और शॉर्ट कॉलम्स में जो फेलियर होते हैं वो होते हैं कंप्रेशन की वजह से, क्रशिंग। मीडियम साइज कॉलम्स में दोनों ही बकलिंग और क्रशिंग, कंप्रेशन कंप्रेशन दोनों ही की वजह से फेलियर हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं कॉलम्स में सिलेंडरनेस रेशियो की। एक इम्पॉर्टेंट है, फैक्टर है कॉलम्स के लिए। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है? Slenderness ratio, it is the ratio of unsupported length of the column to the minimum radius of gyration of the cross-sectional ends of the column. It has no unit whatsoever. So what is the slenderness ratio? It is the ratio of length to the minimum radius of gyration. Okay. इसी टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच।